Hello friends, this is Chartered Accountant Omkar Gadgil. Now today this video is meant for the CMA Final students who are appearing in the June 2016 examination. ये ICWA Final CMA Final examination June 2016 में जो बच्चे अभी appear होंगे तुम लोग के लिए एक छोटा सा tax related video यहाँ पे मैं compile कर रहा हूँ. Now this video will not greatly cover the technical aspects of it in the sense कि मैं आपको कोई चीज़ सिखाने नहीं वाला हूँ यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एग्जाम रिलेटेड गाइडेंस नाउ बिकॉज योर एग्जाम इज जस्ट मे बी इन अ स्पैन ऑफ 10 to 15 days from now. In exam specific days में what you should study, that is what we'll be understanding now in this video. Now तुम्हारा जो टैक्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का पेपर है, सो इट इज ऑफ 100 मार्क्स. नाउ हाउ दोस 100 मार्क्स आर फेयरली डिवाइडेड, लेट अस अंडरस्टैंड. सो यू हैव रफली अराउंड 45 मार्क्स के लिए तुमको इनडायरेक्ट टैक्सेस के क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं. Then around 25 to 30 marks you will be having international taxes, and the balance amount will be there for direct taxes. Now international tax also gives a great weightage to your marks, because great weightage in terms of what, that over there the syllabus coverage is less as compared to the marks that you are going to score. So precisely तुमको 100 marks के लिए excise, then customs, service tax, VAT, CST, as well as international tax, that is transfer pricing and other GARR rules and etc. You need to read them. Plus direct taxes में then you may feel that okay, 5 heads of income है, assessment procedure है, plus appeals and revisions, etc. etc. So see, precisely the provision is a lot more than what generally must be there in 2 papers. It is there in 1 paper. But now that is how it is. Your exam has been structured in the same way. So we need to be preparing for that. Now first of all, 100 मार्क्स के पेपर को हम सेग्रीगेट करेंगे इनटू से मार्क्स एज इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इंटरनेशनल टैक्स. इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. नाउ सो फार एज इनडायरेक्ट टैक्सेस इज कंसर्न, आपने जो सीएमए इंटरमीडिएट दैट इज सीएमए ग्रुप 2 में आपने जो किया था वहां पे एंड यहाँ पे ग्रुप 3 में, एज सच इनडायरेक्ट टैक्सेस के सिलेबस में ज्यादा डिफरेंस नहीं. What may be more or less is that maybe those chapters like foreign trade policy have been introduced newly, or there must be something about the place of, I mean, this service tax, whereas the new regime of service tax that has come up, whereby there are more questions on place of provision of services, or maybe the point of taxation rules and something like that, or negative list based questions or service tax valuation, what you can say. So something more than what you learned in the inter, यहाँ पे आपको थोड़ा सा सर्विस टैक्स में फोकस थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा. एक्साइज एंड कस्टम में अगर हम लोग देखेंगे तो एज सच ज्यादा कुछ डिफरेंस हुआ नहीं. अगर हम लोग बात करेंगे आपके इंस्टीट्यूट के अमेंडमेंट्स के बारे में, so far as the amendments are also concerned, they have been published to you on the website, so needless to say you must have gone through it now. Now so far as let's say indirect taxes का पेपर जहाँ तक हम लोग कंसिडर करेंगे, देखो कैसा होता है कि तुमको एक केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे, देन विल बी द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, मतलब जहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे, एंड थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस, या फिर मे बी वन क्वेश्चन विच विल बी बेस्ड ऑन द कंसेप्ट्स और मे बी ऑन द अमेंडमेंट. दैट इज हाउ द 40-45 मार्क्स ब्लेंड विल बी देयर. नाउ केस लॉज के लिए आपको क्या रेफर कर सकते हो, तो ICAI दैट इज सीए इंस्टीट्यूट का जो सीए के लिए एग्जाम्स फाइनल्स के लिए जो केस लॉज का बुक आता है, वहां से आप केस लॉज रेफर करो. अब केस लॉज तो ढेर सारे हैं, सो ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि अभी आपको पूरे के पूरे ऑल द 200-300 केस लॉज अभी करने ही होंगे. मे बी व्हाट यू कैन डू इज दैट ट्राई टू गेज द केस लॉज विच आर द रिसेंट वंस, और मे बी जो अमेंडमेंट बेस्ड केस लॉज है, या फिर जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि अभी जैसे प्रोसीजरल पार्ट होता है एक्साइज में, सो यू हैव द अपील्स, रिवीजन ऑन इंटरेस्ट, पेनल्टीज एक्सेट्रा. ये वाले केसेस बेशक पूरे सब करके जाओ. जो एक्साइज के बेसिक्स पे निर्भर है, जैसे कस्टम्स एंड एक्साइज के बेसिक्स पे ऊपर है, उन केसेस के बारे में मे बी जस्ट हैव एन ओवरऑल रीडिंग, यू हैव अ गुड रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन, आई मीन केसेस फर्स्ट ऑफ ऑल. साइटेशंस कितना तक ध्यान में रखोगे या नहीं, ये तुम्हारा डिस्क्रिशनरी डिसीजन, बट अभी इट इज अ वेरी शॉर्ट टाइम टू रिमेंबर द साइटेशन इफ यू हैव नॉट लर्न द साइटेशन एज इट, तो इसलिए वो कोई ज्यादा मायने नहीं रखेगा. बट ज्यादा करके योर क्वेश्चन should be something which is going to be have a direct answer to the actual case law that has taken place. So virtually आपका केस लॉस का अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना जरूरी है. सो मे बी फर्स्ट 15 मार्क्स अराउंड यू विल बी स्कोरिंग आउट ऑफ दोस केस लॉस. न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के लिए सेंट्रल एक्साइज वैल्यूएशन रूल्स, कस्टम्स वैल्यूएशन रूल्स, सर्विस टैक्स वैल्यूएशन, एक्साइज में SSI दैट इज 8/2003, ये 4 चैप्टर्स आपके ज्यादा फोकस में रहने चाहिए. ये 4 चैप्टर्स आपको ज्यादा काम में आएंगे, बिकॉज these are the chapters which are having a great amount of weightage only for practical questions, so more or less you are going to have practical questions of them. वैल्यूएशन में रिसेंटली कुछ स्पेसिफिक केसेस हुए रहेंगे, या फिर जैसे एक्साइज वैल्यूएशन में आपको प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन चार्जेस का एक टाटा मोटर्स का 2012 का डिसीजन था,
या फिर समथिंग इन रिलेशन टू द बॉट आउट एक्सेसरीज वेदर इट इज अ कंपलसरी सप्लाई और नॉट, ऐसे टाइप के जो कुछ एडिशन वाले पार्ट है इन चीज़ों के ऊपर फोकस करो. सो बेस्ड ऑन दैट योर वैल्यूएशन क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड टू यू. सेनवैट क्रेडिट में कहूंगा एक दूसरी इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे आपको फोकस करना जरूरी है. सेनवैट क्रेडिट के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है अभी उसके लिए अगर आपके रूल्स का अंडरस्टैंडिंग अच्छा खासा है तो सेनवैट क्रेडिट के क्वेश्चन भी आपको इजीली आंसर आप कर पाओगे. सो दैट विल नॉट टेक मच ऑफ अ टोल ऑफ योर्स. सो सेनवैट क्रेडिट पे भी फोकस अच्छा खासा रखना. सर्विस टैक्स वैल्यूएशन एट द सेम टाइम मीन सर्विस टैक्स में सी वैल्यूएशन एज सच पढ़ने से ज़्यादा भी वैल्यूएशन रूल्स तो है जो स्पेसिफिक स्पेसिफिक जैसे सिचुएशंस कवर करेंगे. Like you have those specific valuation rules in terms of currency valuation or exchange rate fluctuation valuation. I mean वो टाइप के जो currency exchange वाले ये है तो rule में you will get the specification जैसे it is going to be the difference between buy selling rate and the RBI reference rate वो वाले parts. वो जो स्पेसिफिक रूल्स है जहाँ पे एयर ट्रैवल एजेंट्स के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम टाइप के जो वैल्यूएशन मेथड्स है वो सब मेथड्स के ऊपर तो स्पेसिफिक क्वेश्चन आने का चांस होता है मे बी अराउंड 2 to 3 मार्क्स. अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए यू नीड टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेगेटिव लिस्ट, मेगा एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन, अबेटमेंट्स इफ एनी देयर आर, एंड बेस्ड ऑन दैट तुम्हारा वैल्यूएशन का प्रॉब्लम है कैसे फ्यूजन मैनर में आने वाला है. सो इसके लिए ये सब चीज़ों की एक साथ तैयारी अच्छे से करना. डोंट लीव एनीथिंग इन आइसोलेशन, डोंट लीव एनीथिंग फॉर ऑप्शन. दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू फॉलो वेरी मेटिकुलसली. दूसरा जो फिर थर्ड पार्ट जो आईटीटी के पेपर में तुम्हारा आएगा दैट विल बी अबाउट द थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो अमेंडमेंट बेस्ड हो सकते हैं या फिर जो रिसेंटली तुम्हारे जो अमेंडमेंट्स हुए थे उसके ऊपर थियोरी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है खत्म मे बी. अभी जैसे इंटरेस्ट एंड पेनल्टी का क्लॉजेस में कुछ चेंजेस हुए हैं तो फाइनेंस एक्ट 2015 which is applicable for your examination and the amendments which have been given to you on the website, please go through that amendment very meticulously. It is very important that वो सब चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है. तुम्हारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही उसी के बेसिस पे उसी के आधार पे आने वाले इसलिए वो आपको पता होना ज़रूरी है. सो अमेंडमेंट्स के बारे में मेक इट श्योर एंड बाकी कंसेप्ट मतलब जैसे अभी कस्टम्स में छोटे मोटे कंसेप्ट है लाइक डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स or let's say that what do you mean by ICD that is inland container depot and CFS container freight station तो उसमें क्या डिफरेंस होता है मतलब ऐसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है which are going to be catering to around 3 to 4 marks in the paper and वो ऐसे करते करते एक अराउंड 10-12 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा 10-12 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. So overall, this is how your indirect taxes paper is going to be like. So जिसमें आपको again I'll repeat the list that you need to be sure about the cases. So cases के लिए मैंने आपको reference book बताया cases. Numerical problem के लिए all the valuation वाले chapters अच्छे से करो. And the theory based questions जो amendment based आ सकते हैं या concept based आ सकते हैं. This is how the spread will be there. So don't spend much time in reading small thing जैसे अभी सेंट्रल एक्साइज रूल्स को पकड़ के बैठोगे या फिर ऐसा उसमें देखो रूल्स में कुछ एडजस्टमेंट्स है. डेट ऑफ पेमेंट रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है या फिर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट के बारे में कुछ एडजस्टमेंट है. ऐसे कोई चीज़ें अगर रूल्स में हमारे चेंजेस रहेंगे इन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर. Now, so far as international taxes is concerned, see, I'll tell you that is like a banking factor for you that is going to be because the portion is always going to be limited. As in international taxes में creative type के questions ये ज़्यादा width में नहीं आ सकते because the more often you know that international taxes का syllabus जो तुमको जितना दिया हुआ है, so let's say that you have transfer pricing, you have methods of transfer pricing, then concept like what do you mean by tax havens and GAAR के rules में अभी of course those rules didn't turn up actually, so उसके बारे में एक informative knowledge होना. बस ये चीज़ें अगर आप करोगे तो भी आपका इंटरनेशनल टैक्सेस प्रीटी सिक्योर हो जाता है. सेफ हार्बर रूल्स क्या होता है दैट व्हेन दे आर रिसोर्टेड एंड समथिंग लाइक दैट. द थर्ड थिंग दैट विल बी लाइक द डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में सपोर्टिव में अगर बोलूंगा मैं तो प्रोसीजरल पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जितना रहता है कि जैसे अपील्स रिविजन्स सेटलमेंट कमीशन you need to go through these chapters a bit because just understand once how the procedure goes like. See penalties actually ध्यान में रखना काफ़ी difficult हो जाता है understand because इधर 10,000 है कहीं 15,000 है कहीं 20,000 है so that remembering of amounts is pretty difficult but at least you should be having a fair idea as to how those procedural chapters are having a what you can say that जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि कहाँ से लेके एडजुडिकेशन से लेके अपील तक वो चीज़ें जाती है जैसे इनकम टैक्स में या फिर डायरेक्ट टैक्सेस में असेसमेंट से लेके अपील तक आती है वो एक प्रोसेस फ्लो से मालूम होना आपको जरूरी है टू राइट सम गुड ओवरऑल आंसर्स अबाउट इट. एंड प्लस सेक्शन 11 में एक्साइज में कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे प्रोसीजर्स रिलेटेड आई मीन इंटरेस्ट पेनल्टी रिलेटेड सो इंटरेस्ट रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स है वो पढ़ ले. So far as these appeals are concerned appeal का प्रोसीजर मालूम होना it's that much is sufficient as in how the appeals goes and all.
सो ये तुम्हारा पार्ट होगा एक कॉमन प्रोसीजरल पार्ट विच आई कवर्ड आफ्टर इंटरनेशनल टैक्स एंड द लास्ट पार्ट दैट आई willing to cover is about direct taxes. Now see, it is like a too much of a huge thing to do because डायरेक्ट टैक्सेस में हेड्स ऑफ इनकम करोगे आप या फिर प्रोसीजरल पार्ट्स करोगे, जैसे हम लोग बोलेंगे कि assessment procedures वगैरह करोगे, तो that will take a lot of time and that is something not really going to justify the time and purpose. So maybe what you can do is that focus on the heads of income. Heads of income के बारे में अभी ऐसा अंडरस्टैंडिंग है that once you have already done, so capital gains and PGBP, that will be the important ones. PGBP में भी MAT, AMT ये जो करोगे, that will be something which carries a weightage. Now so far as that topic of assessment of various entities जैसे HUF है या फिर assessment of partnership firms है, then you have assessment of a trust or something like that. Now ये various entities के केस में फिर भी अगर हम लोग बोले तो किस चीज़ का, तो companies is important, partnership firms is important, HUF is important, LLP मतलब by default that is also going to get covered. So वो type के various assessments एक 4-5 देख के जाना, that will be helpful for you. Now, so far as the remaining part of direct taxes is concerned, तो PGBP capital gains पे थोड़ा होल्ड अच्छा रखना, उसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं. खास करके अगर PGBP में क्वेश्चंस आते हैं तो मैट बेस्ड ज़्यादा आने की संभावना होती है, तो दैट इज वाई मोर इट इज कंसर्न वेरी मच दैट मैट की प्रोविजन आपको पता होना ज़रूरी है. And especially because it is at the final levels, now they will not be very keen to ask you that okay, calculate the income from house property. But I am not say that house property पढ़ना ही मत. मैं ऐसे बोलता हूँ that heads of income के ऊपर जितना फोकस हमने इंटर में किया था उतना ज़्यादा फोकस अभी करोगे नहीं तो भी चलेगा, because the paper is not going to be revolving around heads of income. Right now it will be more about these chapters ऐसे. एंड लास्टली व्हाट वी कैन से इज दैट डायरेक्ट टैक्सेस में भी जो अमेंडमेंट्स है, डायरेक्ट टैक्सेस में जैसे अभी डिडक्शंस में ये साल अमेंडमेंट्स है, डिडक्शन में आए हुए अमेंडमेंट्स, सो द अमाउंट्स हैव बीन इंक्रीज्ड और द places where donation can be given that have been changed, और या फिर 80 DDB या फिर 80U आई मीन 80 डबल DB वाले सेक्शन में जो अमेंडमेंट्स हुआ है, अमाउंट बेसिक अमाउंट चेंज हुआ है, ये वाले अमेंडमेंट्स को थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, दैट इज गोइंग टू गिव यू सम एज बिकॉज उसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आने के चांसेस है. So see overall then if I analyze then okay, my indirect taxes, international tax and direct taxes में अगर मेरे को around 25-20 marks अगर आ जाता है, so my score generally sets on to go below, I mean beyond 60 or 65 you can say. That will be also something through a very steady approach, means there is not a whole lot of coverage that you are doing. I am not asking you to read thousand pages, बट इन कुछ टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो मेरे हिसाब से, दैट शुड बी समथिंग व्हिच विल रियली बी हेल्पिंग. इनकम टैक्स में जैसे टीडीएस इज वन ऑफ द चैप्टर्स जिसके ऊपर भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए, तो टीडीएस के ऊपर मेरे हिसाब से दैट क्वेश्चंस आपने फोकस करना जरूरी है. TDS is something which is relevant because also TDS in case of international transactions, TTS in case of non-resident transactions, all these are going to be relevant and important. So वो भी पढ़ो. And squaring things, try to attempt the paper to the maximum extent possible and जितना meticulously working notes बनाओगे valuation के questions के लिए, that should be helping your purpose. Marks उतने ही अच्छे आ जाते हैं. इसीलिए ये खास करके just एक suggestive video मैंने आपके लिए बनाया था. So I'll not take much time of yours before the examinations. I wish you all the best. My contact details, I'll be sharing it with my Facebook ID, so you just can ping me sometimes if I have any doubts relating to indirect taxes. And thank you for your patient listening, and I hope this proves some helpful to you. So let me just know, kindly drop in your feedbacks about the video to me as well whenever it is possible for you. For the time being, I wish you all the best and I would sign off. Thank you.